नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चार्ट्स पे चर्चा। Thanks for all your comments and shares and likes of the last two videos. I think may more or less वैसे ही पैन आउट हुआ है जैसे हमने हमारे वीडियोस में डिस्कस किया था। वी आर एट द फैग एंड ऑफ मे। आई थिंक शायद 2 दिन का ट्रेडिंग बचा हुआ है मई महीने का, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी में we have already moved into the June expiry now. Hence the title 2022 June forecast. तो क्या मेहम खत्म होने के बाद जून में थोड़ी सी बाहर आएगी? That's the big question that everyone has, and so let's go straight to the charts. So निफ्टी बिग पिक्चर से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, 20 मंथ मूविंग एवरेज जो अभी है 15,748 पर, हम वहीं से सपोर्ट ले रहे हैं अभी तक। And I also told you कि after many months, Nifty has actually come back to touch the 20-month moving average. तो क्या ये वेव 4 यहाँ खत्म हो गया है या नहीं, उसके लिए we'll have to go down the scale. लास्ट वीडियो में मैंने 2 और करेक्शंस डिस्कस किया था जो पहले हुए थे, राइट? इफ यू रिमेंबर, एंड आई सेड कि इस बार का भी करेक्टिव पैटर्न कुछ उन दोनों करेक्शंस की तरह ही है, जहाँ पे करेक्शन जो है थोड़ा एक्सपैंडिंग पैटर्न में है, यहाँ पर और यहाँ पर, राइट? सिमिलरली currently also we are in an expanding pattern. Similarities भी दिख रहे थे last time, so I did a little more in-depth study. I hope this will be useful for you all. तो पहले चलते हैं नवंबर 2010 से दिसंबर 2011 का जो करेक्शन हुआ था, राइट? 1 साल से भी ज्यादा, 13 महीने का करेक्शन। यहाँ अगर आप देखोगे, मैंने वीकली स्केल पर लेबलिंग की है। इट शुड बी अबाउट 99% एक्यूरेट। बाल के खाल निकालोगे तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि यहाँ ए नहीं था, यहाँ बी नहीं था, बट ओवरऑल इट वाज क्लियरली एन एक्सपैंडिंग पैटर्न, राइट? इनफैक्ट इसको थोड़ा और यहाँ से मूव कर सकते हैं। सो ए बी सी, तो डब्ल्यू लग गया है, एक और ए बी सी, दिस इज एक्स वेव। मार्केट अगेन करेक्टेड इन ए बी सी, यहाँ पे वाई, उसके बाद फिर से एक और ए बी सी, तो ये एक्स हो गया है, एंड फाइनल ए बी सी डाउन, तो यहाँ z लग गया है। सो w x y x z, ओके। सो कॉम्प्लेक्स करेक्शन, बिल्कुल जैसे अभी हमें करेंटली थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी लेग ये सवाल जरूर आता है कि इज द बॉटम डन, आर वी गोइंग अप टू न्यू हाइज? वो ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन पे टकराता है और नीचे आ जाता है, राइट? तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से टकराया वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ टाइम, राइट? ओनली फिफ्थ टाइम इट एक्चुअली वेंट अबव इट। और आप देखोगे कि ब्रेकआउट होने के बाद वापस जब करेक्शन आया तो अगेन उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, राइट? एंड द अदर थिंग टू नोटिस ऑन द वीकली स्केल इज प्राइस करेक्टेड बैक टू द पिंक कर्व व्हिच इज द 200 वीक मूविंग एवरेज। इसको जरूर याद रखना। We moved to the next such correction which happened from March 2015 to March 2016. तो ये 1 साल का था, वो 13 महीने का था, ये 12 महीने का है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक्सपैंडिंग पैटर्न करेक्शन है, एंड वही ए बी सी डब्ल्यू, ये ए बी और सी, राइट? आप चाहो तो इस सी को यहाँ पे भी लगा सकते हो और आर्ग्यू कर सकते हो कि ये ए बी सी था, डजंट मैटर रियली, बट द पॉइंट इज द सेम, राइट? हर बार लगता है कि इज द बॉटम डन, बट मार्केट गोज अप
kisses the falling trend line, drops back again does the same thing, and again A, B, C, यहाँ पे Z खत्म हुआ है. तो basically 1, 2, 3 times corrective legs, right? Again यहाँ पर भी देखिए आप, pink curve, price comes and meets the pink curve, which is the 200-week moving average. So in this historic context, अभी हम कहाँ पर है, right? हम यहाँ पर है और पिंक कर्व है 13,100 पर. माय गॉड, दैट्स अबाउट ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स अवे. तो आप पूछ सकते हो कि क्या वहां तक जाएगा मार्केट? आई डू नॉट नो, बट इसी तरह अगर कॉम्प्लेक्स पैटर्न चल रहा है जहाँ पे आपने देखा है कि 3 टाइम्स एबीसी एबीसी बनते हैं नीचे की तरफ, राइट? सो अभी कितनी बार यहाँ खत्म हुआ है एबीसी, राइट? When I can put the C here also if you want, and this can be an irregular flat ABC, doesn't matter, right? ABC एक बार हुआ है, फिर से ABC दूसरी बार हुआ है, ABC ये थर्ड टाइम खत्म हो गया है क्या? It's not very easy to say correctly, but अगर हम टाइम देखते हैं, राइट, ये हम करेक्शन कब शुरू हुआ है? आई थिंक अक्टूबर. दिस इज इट अक्टूबर? Yes, October 2021, right? So let me write it here. से शुरू हुआ ये करेक्शन, राइट? और पिछले 2 एग्जांपल्स का अगर देखें तो 1 साल का करेक्शन करीब है. सो क्या ये करेक्शन अक्टूबर या नवंबर 2022 तक चलेगा? That's a question that is waiting to be answered. We don't know. Will history repeat? Maybe, maybe not. Coming back to the internal wave count, अगर ये A, B, C, W और X और Y अगर यहाँ खत्म हो गया है तो ये रोमन 4 यहाँ लग जाएगा, बड़ा वाला, क्योंकि अभी तक प्राइस ने इस लो को ब्रीच नहीं किया. ये लो था 15,671 और अभी रिसेंट लो था 15,739, राइट? तो दिस लो, as long as it is not breached, it is possible to assume, I mean we can assume कि maybe this is the bottom done. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार Z जो है वो नया लो बनाए, जैसे यहाँ बनाया या यहाँ बनाया. Sometimes Z can fall short also. The other thing to remember, very important, यहाँ पे इंटरनल काउंट, वेव काउंट मैंने हटा दिया था, बट ये अगर रोमन 1 है, ये रोमन 2 है, ये रोमन 3 और ये रोमन 4, राइट? एंड यहाँ जाकर रोमन 5 खत्म हो गया, तो बड़ा वाला एक वेव 3 सर्कल खत्म हुआ था. सो वेव 4 में ट्रायंगल हो सकता है, राइट? दैट इज पॉसिबल. सो सिंस दिस इज ऑल्सो वेव 4, राइट, वेव 4 ब्रैकेट, क्या ऐसा तो नहीं कि ये पूरा करेक्शन A, B, C, D और E करेक्शन खत्म हो गया हो? इट्स पॉसिबल. ये काम यहाँ पर नहीं हुआ था. I can't label this as a triangle because the shape doesn't look like that. This shape definitely does not look like a triangle to me. Right? Slightly expanding pattern है, complex जरूर है, but यहाँ वो एक possibility है कि it can be an expanding triangle kind of a thing where the E leg is fallen short. अगर ये सही है तो हम लेबल कर सकते हैं कि 4th यहाँ खत्म हो गई, and then we are starting off on a new impulse, but we don't know, we don't have enough information. Purely by Elliott wave we don't have enough information. तो और information के लिए हम
इंटरनल वेव काउंट पे चलते हैं, डेली स्केल पे, राइट। देखिए बिल्कुल पिछले दो करेक्शंस की तरह ही एग्जैक्टली यहाँ पर भी प्राइस ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन को किस करता है, नीचे आ गया, यहाँ पे किस कर गया, नीचे आ गया. So if the correction ended here, can we count this as an impulse? तो मैंने देखा कि एक्चुअली हम इम्पल्स की तरह इसको काउंट जरूर कर सकते हैं. वेव 1 यहाँ खत्म हो गया, 2 3 4 5. बट इस काउंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वेव 3 लुक्स टू बी द शॉर्टेस्ट, जो एलियट वेव के रूल्स के हिसाब से इज नॉट पॉसिबल. वेव 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट, इट कैन बी द सेकेंड शॉर्टेस्ट. बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जितना लंबा वेव 1 है और जितना लंबा वेव 5 है, उससे काफी छोटा वेव 3 है. सो बाय दैट लॉजिक this cannot be an impulse wave. So we can safely rule out this option, that this is an impulse wave. So I'll just delete these things. I did this for educational purposes, क्योंकि मुझे भी उस टाइम में ये impulse wave की तरह दिख रहा था काफी देर तक, right? So this is clearly not an impulse wave. So this has to be labeled as another X wave. So let's label it as another X. Yeah. And the question is, has wave Z finished here? अभी हमें नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे पास 100% प्रूफ नहीं है कि ये बॉटम बन गया है. डेली स्केल में भी प्रूफ नहीं है. We can say that this was A and this whole thing was B, either a triangle or a simple zigzag. And मामला गड़बड़ यहाँ पे शुरू हो जाता है. ये जो पूरा खिचपिच चल रहा है कि वन वे टू काउंट इट इज, चलो सी वेव के अंदर 1 2 3, ये छोटा सा ब्लू जो है ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ वेव फेलियर होगा शायद. फिफ्थ वेव फेल शॉर्ट, जो होता है कई बार. दैट्स वन वे टू काउंट इट. सो व्हिच इज व्हाई आई पुट अ क्वेश्चन मार्क. फिफ्थ खत्म हो गया क्या, व्हिच मींस सी हैज फिनिश्ड हियर, and hence this whole ABC can be labeled as Z. But everything is a question mark. Why is it a question mark? Because we are not sure about it. क्यों नहीं sure है? Wave 4 has to be a 3 wave, right? तो क्या ये A है और ये B है और ये C था, तो क्या ये फोर्थ यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए? Did fifth finish here? We don't know. The other thing, wave force can also be triangles. So what if this whole thing is still a triangle taking shape? तो मैंने ये लेबलिंग किया है आवरली में. अगर हम आवरली स्केल पे जाते हैं तो आपको दिखेगा ये चीज. तो यहाँ से लेके what if this whole ABC is A, this is B, this is C, D, E. ये बहुत बड़ा ट्रायंगल खत्म हो गया है फ्राइडे के दिन या खत्म होने वाला है, ये एक और पॉसिबिलिटी है. Which means once this triangle is finished, again the market will drop down in the final fifth wave of this correction. ये एक सवाल है. दूसरा सवाल ये है कि इंटरनल वेव काउंट अगर थोड़ा बदल दोगे तो ऐसा भी लगता है कि ये जो 5 मैंने यहाँ लगाया, मे बी इट डिडंट फिनिश हियर, मे बी इट फिनिश्ड हियर. बाय दैट लॉजिक we are in a ABC bounce. Now in an ABC the C can sometime extend also. तो कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता. तो कुल मिलाकर कहानी है कि बहुत कंफ्यूजिंग पिक्चर है, प्योरली गोइंग बाय एलियट वेव. सो वी नीड टू गिव द मार्केट a little bit of time to resolve this for us. हमें कोई जल्दी नहीं है मार्केट में कूद पड़ने की. The other thing notice is this huge gap down that happened. So maybe the market is just going to fill that gap, right? We don't know. So coming back to the daily scale, price on Friday closed above the 20-day moving average. That is a positive sign. But फिर भी इसने पिछला हाई को नहीं तोड़ा है, 16,415. It didn't go above it, right?
कुछ 60-70 पॉइंट से रह गया है। अगर ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ABC है, it is possible that this price goes all the way to meet the 40 DMA, which is 16,860 currently. क्या ये होने वाला है? We don't know. But if history is repeating, तो अभी हम इस जगह पे हैं, राइट? ये बाई लगाने के बाद एक कैंडल या दो कैंडल खत्म हुए हैं हमारे। We are here. So we need to give time for this to be resolved. अगर ये हिस्ट्री रिपीट हो रहा है तो अभी हो सकता है कि हम ऊपर तक जाए यहाँ तक और फिर वापस नीचे। So let's give the market some time and see how it goes. Daily scale पे definitely पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुई है मार्केट। द अदर थिंग, ये जो कंसोलिडेशन जोन 2-2.5 महीने का जो कंसोलिडेशन जोन था, दिस इज स्टिल होल्डिंग। बट जैसे कि मैंने अंदर दिखाया है कि इफ दिस इज ऑल अ ट्रायंगल व्हिच इज फिनिशिंग और जस्ट अबाउट टू बी फिनिश्ड, markets should start heading down. So let's see what happens. For everyone's benefit, let's also go to see the other indices. Nifty Bank देख लेते हैं एक बार। Nifty Bank. So Nifty Bank, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रीच जरूर किया था वीकली स्केल में भी, बट इट क्लाइम्ड बैक। सो ऑन डेली स्केल पिक्चर लुक्स समवॉट लाइक दिस। तो सवाल ये है कि वाज इट जस्ट अ ABC करेक्शन दैट फिनिश्ड एंड is this an impulse? But again, this doesn't look like an impulse when you count it. तो ये भी करेक्टिव वेव ही है। तो सवाल ये है कि व्हाट इज दिस ABCW, यहाँ पे X लग गया, क्या Y खत्म करके फिर से X लगाने जा रहा है, or did the correction finish here? We don't have a confirmed answer yet. Price big round number 35,000 के ऊपर क्लाइम कर चुका है, right? So will it come down? Will it go up? Again, we need to give it some time to see. ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर से ब्रेकआउट करके निकल जाता है तो इट्स अ वेरी गुड साइन, because the price is currently below 20 as well as 40 week moving average. Daily में बैंक निफ्टी has closed very well above the 20-day moving average 2 दिन के लिए, and it is pushing the 40-day moving average. तो हो सकता है कि banks have actually bottomed out earlier than main nifty. ये एक possibility है। Let's go to the broader market. Nifty 500, यहाँ पर भी पिक्चर कुछ ऐसा ही है, राइट? एक्सपैंडिंग पैटर्न, A B C, so maybe this is W, this is Y, is this Z, we don't know. यहाँ पर भी पैटर्न कुछ निफ्टी जैसा ही बना है। This could very well be a simple ABC or a triangle. Again, I don't know. Let the price close above the 20-day moving average. उसके बाद कुछ पता चलेगा हमें। When we look at mid cap, same, similar confusion more or less. This is mid cap index, weekly and daily, but they're all pretty close to the previous wave 4. So we need to give it some benefit of doubt कि हाँ इनमें शायद correction खत्म हो गई है। But small cap, like I explained last time, typically इसके moves exaggerated होते हैं, तो it is corrected a lot more, way below the previous 4th wave. अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, लेट्स लुक एट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का जो प्राइस है वो मंथली स्केल पे 20-month मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया है, राइट? व्हिच मींस टेक्निकली it can go to the 40-month moving average, but it is currently taking support of this midpoint in the pitchfork.
Small cap. Mid cap is still strong above the 20-month moving average. Nifty 500 is also above 20-month moving average. कंफ्यूजन ऐड करने के लिए थोड़े और फैक्टर्स भी हैं कि if you look at the Nifty metals index, right? Nifty metal monthly scale पे it is correcting back to the 20-month moving average. 4867 पे है 4954, तो 100 पॉइंट और रह गए हैं, but it's pretty close to a deep correction. It is also gone below the previous wave 4. एंड अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट भी लगाएं सिंपल, तो अगर ये पूरा वेव 3 सर्कल था तो उसके 38.2% तक ऑलमोस्ट आ गया है. इट्स either डन और वेरी क्लोज टू बीइंग डन. सो वेव 4 सर्कल हम इसके आसपास लगा पाएंगे बहुत जल्दी. बट अगेन मे बी वी कैन गिव इट अ वीक और 2 एंड सी हाउ इट गोस. आईटी इंडेक्स ने भी काफी करेक्शन किया है. निफ्टी आईटी राइट. ये थोड़ा मेरा चार्ट में प्रॉब्लम है विच आई नेवर बीन एबल टू करेक्ट. सो इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म वेव काउंट बना नहीं पाता हूँ. बट ये राइजिंग चैनल से ब्रेकडाउन जो हुआ है, इट इज एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट. ये जो कंसोलिडेशन था 27,500, अब देखो वहीं से मस्त बाउंस किया है मार्केट. निफ्टी आईटी इंडेक्स, right? So Nifty IT index also seems to be pretty close to finishing the corrective wave. Either it's done or it's about to be finished. The pura ABC correction. So looking at the strength in banks, looking at the almost finished corrections in both Nifty Metal as well as Nifty IT, it looks like Nifty is trying to figure out कि बस जितना डराना है लोगों को डरा दिया, अब चले या नहीं चले. बट लाइक वी ऑलवेज लर्न, मार्केट्स में कोई गारंटीज नहीं होते हैं, तो थोड़ा लेट्स बी बिट शार्प एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. सो निफ्टी ऑटो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पिक्चर है बिकॉज आउट ऑफ लॉट ऑफ द इंडिसेस एक्चुअली निफ्टी ऑटो ने बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं किया है. एंड जबकि निफ्टी एंड अदर इंडिसेस आर मेकिंग न्यू लोज, आप ये देखो कि Nifty Auto actually is pretty close to the highs. So this is very soon going to give a confirmation कि breakout देने वाला है या वापस नीचे जाने वाला है. If it starts moving above this high, which I labeled as X question mark, and if it convincingly breaks out of this falling trend line, Nifty Auto में कुछ मजेदार ट्रेड्स मिल सकते हैं. Nifty Pharma इसने बहुत पकाया है. Just about trying to hang on to 20-month moving average. Again, देखिए previous low break नहीं किया Nifty Pharma ने. So it's actually Nifty Pharma index को अगर देखा तो it's a low risk long opportunity. तो individual stocks को हमें देखना पड़ेगा. I'll see if I can find any good options trade like the one I shared on VEDL 2-3 weeks back. That was bumper trade, right? और कौन सा इंडेक्स है? Let's look at PSU banks. So Nifty PSU banks correction हुआ है, but price is very very strong, both above the 20-month as well as the 40-month moving average. On weekly scale, it is dancing around the 200-week moving average. So it's pretty strong. Maybe it is doing some kind of a complex corrective pattern. We don't know. देखते हैं, but बहुत deep correction नहीं हुआ है Nifty PSU banks. Now going back to Nifty, since Anand is not with us on this video as well, volume expansion perspective भी देख लेते हैं.
So if you look at the volumes on Nifty futures, प्राइस ऊपर जरूर गया है पिछले एक हफ्ता 10 दिन में, वॉल्यूम्स इतने कुछ खास नहीं है. इनफैक्ट वॉल्यूम्स हैव बीन डिपिंग फ्रॉम दिस बॉटम. So on decreasing volumes, the price is rising. This is also the quality of a triangle. Right? Triangle में भी volumes जो है कम होने लग जाते हैं. So this again tells me to be cautious, not to get carried away with the bullish trend. जब तक हमें कोई मेजर वॉल्यूम इंडिकेशन नहीं मिलता है. बट अगर प्रीवियस कुछ दिनों का देखें तो जैसे इसमें थोड़ा हाई वॉल्यूम था, तो इस कैंडल, so definitely the price is above that, which is a good sign. But I will still wait for it to cross this falling trend line and one more big volume spike. तो जब तक नहीं दिखेगा मैं थोड़ा circumspect रहूंगा इस rise से. So that's about it. Yeah, I hope I've been able to give some good perspective. I know थोड़ा अभी confusing structure है, but that is what it is. It is confusing. It is not 100% clear signal to me. So let's take one day at a time. जब भी key levels cross करता है market ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, that is when we should actually place our big bets. And अगर आप देखोगे तो recent volumes में this was the highest volume candle, which is this candle. अभी तक तो हम वहां तक पहुंचे भी नहीं, 16,600 के आसपास. So let's see how it goes and then take a call. Thanks for your patience and do leave your comments. See you on the next video.